Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the LawEd channel. In our previous video, we have completed 20 MCQs of the Bharatiya NYAYA SANHITA, and in this video, we are going to continue the series of 1000 best MCQs of the new criminal laws. So let's start. In our last video, I have asked you a question that the punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India by which of the following sections. आई होप आपने डायरेक्ट रीड करा होगा एंड वी ऑल नो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सेक्शन 1 का क्लॉज 4। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आप सेक्शन 1 को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। एंड हमारा सही आंसर है सेक्शन 1 क्लॉज 4। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुबारक अली अहमद वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे। हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ऑफ द बीएनएस या फिर आईपीसी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिस केस लॉ दैट इज मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। इज इट ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस? इज इट ऑप्शन नंबर बी cheating and territorial jurisdiction? Is it option number C, that is section 3 clause 2 and section 318 clause 4 and the territorial jurisdiction? Or is it option number D, both A and C? हम बात कर रहे हैं मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के बारे में, तो इनमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है? आई होप आपने बहुत बार इस केस लॉ को पढ़ा होगा। अगर आप आईपीसी पढ़ चुके हैं या फिर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने अपने लॉ स्कूल में ऑलरेडी पढ़ लिया है आईपीसी, तो मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस चीटिंग एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक है। मुबारक अली अहमद का केस चीटिंग एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के रिगार्डिंग में केस है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सेक्शन कन्वेज that the definitions in the संहिता to be understood subject to exceptions? हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन सा सेक्शन कन्वे करता है कि जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं इस संहिता में, वी हैव टू read this along with the exceptions. Is it section 1 clause 5 of the BNS? Is it section 1 clause 7 of the BNS? Is it section 3 clause 1 of the BNS? Or is it section 3 clause 4 of the BNS? We are talking about the definitions in the Sanhita to be understood subject to exceptions. See, नए criminal laws आपके लिए बहुत important हो जाते हैं with regard to any state judiciary, because जहाँ पर भी अब criminal laws आते थे उन सारे जगहों पर नए criminal laws पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी का भी सिलेबस आप देख सकते हैं, नए criminal laws आने वाले हैं, तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टेट जहाँ पर भी नए criminal laws पूछे जाने वाले हैं। और इसका सही आंसर मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस सेक्शन 3 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशंस इन द संहिता टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर है, विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के उसने जेड को अप्रीहेंड करा, हु हैज कमिटेड मर्डर। Okay, here A is not guilty of the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exceptions which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law and to do it, ठीक है। और हमारे ऑप्शंस हैं ट्रू, फॉल्स, मे बी या ट्रू बाय मीन्स ऑफ सेक्शन 3 क्लॉज 1। क्वेश्चन में बोला गया ए जो एक पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने बिना किसी वारंट के जेड को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, बिकॉज जेड हैज कमिटेड अ मर्डर। यहाँ पर ए को तो हमने गिल्टी नहीं ठहराया फॉर द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बिकॉज ही वाज बाउंड बाय लॉ टू अप्रीहेंड जेड, ठीक है। एंड ये एक एक्सेप्शन में फॉल करता है, और एक्सेप्शन है दैट इज नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, is it maybe, or is it option number D, true by means of section 3 clause 1?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स इट इज ट्रू बाय मीन्स ऑफ सेक्शन 3 क्लॉज 1। ओके, साथ ही साथ इसे हम एक्सेप्शंस के साथ पढ़ेंगे, जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी पर्सन liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of the Bhartiya Nyaya Sanhita for any act committed beyond India in the same manner। किसी भी पर्सन को जब हम लायबल ठहराना चाहते हैं बाय द इंडियन लॉ कोई भी ऑफेंस के लिए जो कि इंडिया के बाहर कमिट हुआ है, तो ही शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द बीएनएस फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर। किस मैनर में हम उसे ट्राई करेंगे? तो इज इट ऑप्शन ए, दैट इज एज इफ सच एक्ट हैज बीन कमिटेड विदाउट इंडिया। ऑप्शन बी, एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। इज इट ऑप्शन सी, दैट इज एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। We are talking about an offense which has been committed outside India and we want to try that person in India. So how we are going to try it? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स हम उसे इस तरह से ट्राई करेंगे एज इफ सच एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14। हम 2 क्लॉज 14 की बात कर रहे हैं जिसमें इंजरी का क्या मतलब होता है। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 इंजरी को डिफाइन करता है। हमारे आईपीसी में इंजरी की डेफिनेशन दी हुई थी सेक्शन नंबर 44 में। ओके, अब यहाँ पे इंजरी का क्या मतलब है? डज इट मीन दैट इलीगली कॉज्ड टू अ पर्सन इन बॉडी एंड प्रॉपर्टी। इलीगली हमने कॉज कर दिया बॉडी और प्रॉपर्टी में एक इंजरी, ऐसा हार्म। इज इट ऑप्शन बी, दैट इज harm which is illegally caused to any person in body, mind, reputation or property? Is it option C, that is illegally caused to a person in body and mind? Or is it option number D, that is illegally caused to any person in mind and reputation? So we are talking about the definition of injury, और इंजरी का मतलब होता है कोई भी हार्म पहुंचाना। तो हम कहाँ पे या किस तरह से हम हार्म पहुंचाते हैं? तो इफ वी कमिट एनी ऑफेंस, इफ वी कमिट एनी इंजरी, हम किसी भी पर्सन को अगर इंजरी कॉज करना चाहते हैं, किसी भी पर्सन को, ओके मतलब उसकी बॉडी को माइंड को, रेप्यूटेशन को और प्रॉपर्टी को, तो ये सारी चीजें इंजरी में आ जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंजरी में हम बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी कहीं भी इंजरी कर सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज under section 2 clause 28 of the BNS. Section 2 clause 28 of BNS talks about what? Is it option A, that is municipal commissioner is a public servant under BNS? Is it option B, that is every person who holds any office due to which he is empowered to place to keep any person in confinement? Is it option number C, that every person in the service or pay of the government or remunerated by the fees or commission for the performance of any public duty by the private individual? Or is it option number D, both A and B? Check out the question once again. We are talking about section 2 clause 28. 2 clause 28 में क्या बात कही गई है? मैंने बताया है सेक्शन 1, 2 एंड 3, इन तीनों सेक्शन के क्लॉजेस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। These are the options. Pause the video and read the options carefully. और मैं बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स अंडर म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर बीएनएस। बीएनएस में म्युनिसिपल कमिश्नर को हम एक पब्लिक सर्वेंट माने हैं एज पर सेक्शन 28, and also that every person who holds any office due to which he is empowered to place to keep any person in confinement. ठीक है, तो both the above options are correct. हमारा next question है court. Court conveys that all judges who are empowered by law to act judicially alone or as a body, when such judge
or judges is acting as ombudsman but not as judicially. It has been defined under which section of the BNS? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी कोर्ट. सी, कोर्ट की यहाँ सीधी सीधी डेफिनेशन दी हुई है. ठीक है, तो ये कौन से सेक्शन में दी हुई है? इज इट सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 5, सेक्शन 2 क्लॉज 18 और इज इट सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑफ द BNS? कोर्ट की डेफिनेशन. And the correct answer to this question will be option number B, that means section 2 clause 5. The next question is, which case is known as the Indus River case? इनमें से कौन से केस को हम इंडस रिवर केस कहते हैं? Is it option A, that is बरेंद्र कुमार घोष versus state of Punjab? Is it option B, Kanpur University versus state of UP? Is it option number C, state of Pepsu versus Ram Raja? Is it option D, Mehboob Shah versus Emperor? We are talking about the Indus River case. इन सब में से कौन से केस को हम इंडस रिवर केस भी कहते हैं? ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट. And the correct answer to this question will be option number D, that is Mehboob Shah versus Emperor case is also known as the Indus River case. Kindly learn this question because this is very important. And the next question is wrongful gain. wrongful gain का क्या मतलब होता है? ओके, क्वेश्चन है wrongful gain की मीनिंग हम पूछ रहे हैं. And we have options: gain to a person by means where he was legally entitled. Option B, person gains some property legally. Option C, person gains the property holding such a position where he is legally entitled but without lawful means. Or is it option D, that is wrongful gain is the gain when the person is not legally entitled and gains it with unlawful manner? Question number 30. And the correct answer to this question will be option number D, that is wrongful gain is the gain where the person is not legally entitled. ठीक है, I am not legally entitled to gain, still I am gaining something, तो that is a wrongful gain. Okay, ये wrongful gain की definition में आ जाएगा. ठीक है, and wrongful gain की definition कौन से section में दी गई है? Kindly comment. The next question is wrongful loss means. अब wrongful loss का क्या मतलब होता है? तो loss by unlawful means, or is it loss by lawful means but losing it unlawfully? Is it option C, that is loss under such a circumstances where person is legally entitled not to loss but such loss occurs? How it occurs? So by unlawful means of other person's act without his fault. Or is it option number D, none of the above? We are talking about the definition of wrongful loss. इसका क्या मतलब होता है? I hope you have read the options very carefully. And the correct answer to this question is option number C. That means loss under such a circumstance where person is legally entitled not to loss. That means if I am entitled to something, ठीक है, and I lose it, so that is wrongful loss. And वो wrongful loss अनलॉफुल तरीके से होता है बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ अदर पर्सन्स एक्ट विदाउट हिज फॉल्ट. ठीक है, अनलॉफुल मीन्स से होगा बाय अदर पर्सन्स एक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डिसऑनेस्टली डिफाइंस अंडर BNS एक्ट. डिसऑनेस्टली वर्ड का हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं आपसे. इज इट ऑप्शन ए, दैट इज डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful loss to one person or wrongful loss to another person? Is it option B, that is doing anything with the intention of causing wrongful loss to one person and wrongful gain to another person? Is it option number C, that is doing anything with the intention of causing wrongful loss to one person or wrongful gain to another? Or is it option number D, none of the above?
वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टर्म डिसऑनेस्टली। ठीक है, डिसऑनेस्टली का डेफिनेशन पूछ रही हूँ मैं आपसे। एंड काइंडली कमेंट मी द सेक्शन नंबर जिसमें डिसऑनेस्टली डिफाइंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful लॉस टू वन पर्सन और wrongful गेन टू अनदर पर्सन। ठीक है, किसी को wrongful लॉस हो रहा है या wrongful गेन हो रहा है विद द इंटेंशन, आप इस इंटेंशन से कर रहे हैं कोई भी एक्ट कि जिससे किसी पर्सन को wrongful लॉस हो जाए या wrongful गेन हो जाए, तो दैट एक्ट इज नोन एज डूइंग दैट थिंग डिसऑनेस्टली। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम फ्रॉडुलेंटली की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, ये फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी हुई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड फ्रॉडुलेंटली क्या डिफाइंड होता है या फ्रॉडुलेंटली की क्या डेफिनेशन होती है, आप मुझे ऑप्शन से बताइए। एंड वी हैव ऑप्शंस। ए, दैट इज अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग डिसऑनेस्टली if he does that thing but only with the knowledge to fraud. Option B, a person does an act fraudulently having intention to defraud but otherwise happens. Option C, a person is said to do a thing dishonestly if he does that thing with intent to defraud but otherwise allowed. And option D, that is a person does an act fraudulently having intention to defraud but not otherwise. Question number 33, we are talking about the definition of fraudulently. दो ऑप्शंस यहाँ पर हैं एंड दो ऑप्शंस यहाँ ऊपर वाले पेज में हैं, तो इन दोनों पेज के ऑप्शंस को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। आई होप आपने ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। एंड the correct answer to this question will be option number D. That is, a person does an act fraudulently having intention to defraud but not otherwise is the definition of word fraudulently. ठीक है? And in which section it has been defined, you have to comment me. The next question is, offense for the purpose of BNS. ऑफेंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशंस। ओके, ऑफेंस की डेफिनेशन अब आप मुझे बताएंगे। तो ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल अंडर बीएनएस 2023। ऑप्शन बी, एक्ट पनिशेबल अंडर लोकल लॉ और स्पेशल लॉ। ऑप्शन सी, ऑफेंस इज एक्ट वेयर फाइन इज इम्पोज्ड ओनली। और ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्ड ऑफेंस। ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल अंडर बीएनएस 2023, ये बात सच है। एंड ऑल्सो एक्ट पनिशेबल अंडर लोकल लॉ और स्पेशल लॉ, उसे भी हम ऑफेंस कहते हैं। दैट मीन्स बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। हमारा सी ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ? आई होप आपने ओनली वर्ड पर ध्यान दिया होगा। कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें सिर्फ फाइन इम्पोज किया जा सकता है, क्या सिर्फ उसी चीज को हम ऑफेंस कह सकते हैं? नहीं, देयर आर अदर पनिशमेंट्स ऑल्सो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हम इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पे पूछ रहे हैं। स्पेशल लॉ क्या सेक्शन 2 क्लॉज 30 में डिफाइन है? लोकल लॉ क्या सेक्शन 2 क्लॉज 18 में डिफाइन है? ऑफेंस सेक्शन 24 में डिफाइन है या फिर वॉलेंटरली सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइन है? इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? दिस इज एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, वॉलेंटरली सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइन नहीं है। दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 24। ओके, 2 क्लॉज 24, 2 होगा यहाँ पे। काइंडली पे अटेंशन, दिस इज 224। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर बीएनएस 2023 डेथ का क्या मतलब होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेथ। ओके, तो डज इट मीन डेथ ऑफ एनी क्रिएचर? इज इट डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग्स और बाय एनिमल और एनी नेचुरल कैलामिटी? Is it death of human being unless contrary appears? Or is it option number D, none of the above? तो none of the above तो नहीं है, मैं बता दे रही हूँ।
अब इन तीनों में से क्या सही आंसर हो सकता है? डेथ की अगर हम बात करें तो डेथ का मतलब होता है डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स, ये बात साफ साफ लिखी गई है हमारे बीएनएस में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और डेथ की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, काइंडली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट आंसर। यहां पर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डिफाइन है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 2 क्लॉज 31, विल सेक्शन 2 क्लॉज 34, काउंटरफिट है सेक्शन 2 क्लॉज 3 में, फ्रॉडुलेंटली है सेक्शन 2 क्लॉज 4 में, wrongful gain सेक्शन 2 क्लॉज 36 एंड wrongful loss सेक्शन 2 क्लॉज 37। अगर आपने मेरे कहने पर सेक्शन 2 अच्छे से पढ़ा है तो यू कैन इजिली गिव दिस आंसर। एंड मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर काउंटरफिट और फ्रॉडुलेंटली दोनों की डेफिनेशन गलत सेक्शंस में डिनोटेड है। आप एक काम करिए, आप सेक्शन 2 को अच्छी तरह से याद कर लीजिए सारे वर्ड्स को। दैट मीन्स सेक्शन 2 के क्लॉज 1 से लेके 39 तक जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या क्या चीजें हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसाइड द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है एंड वी हैव ऑप्शंस। A writing expressing the terms of a contract which may not be used as evidence of a contract is a document. Option B, a check upon a banker is a document. Option C, both A and B, या option D, none of the above. Writing expressing the terms of contract which may not be used as evidence of contract is a document. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आपको इस नॉट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज अगर हमारी इंटेंशन नहीं थी कि हम किसी भी रिटन एविडेंस को या जो भी लेटर्स फिगर्स और मार्क्स में दिए रहते हैं उन चीज़ों को हम एज अ डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस अगर नहीं भी यूज करने वाले थे, स्टिल दैट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। कुछ भी जो कि रिटन फॉर्म में है इन लेटर्स, वर्ड्स, फिगर्स, मार्क्स, ऑल दीज आर द documents. Okay, check upon a banker is also a document. That is why both the options are correct. The next question is voluntarily. A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it or by means which at the time of employing those means. Option A, he had the knowledge of it. तो वॉलेंट्री की जो डेफिनेशन है इसे आपको कंप्लीट करनी है। ओके, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन दी हुई है। तो ऑप्शन ए है ही हैड द नॉलेज ऑफ इट। ऑप्शन बी, ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। ऑप्शन सी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, या ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। Voluntarily का मतलब है a person is said to cause an effect voluntarily when he cause it by means whereby he intended to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. Option number B is the correct answer. हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इन पैरे डिलिक्टो मीन्स। इन पैरे डिलिक्टो का क्या मतलब होता है? Is it option A, equally at fault? Is it option B, without mens rea but actus reus has been done? Is it option C, reason to believe to be happened in all probability to cause it? Or is it option number D, none of the above? We are asking the meaning of in pari delicto, okay? And the correct answer to this question will be option number A, that means equally at fault. इन पैरिडिलिक्टो का मतलब होता है equally at fault। और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अपनी नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगी। एंड दिस इज द क्वेश्चन। अंडर BNS 2023 द वर्ड इंजरी डिनोट्स, इंजरी का क्या मतलब होता है? एनी हार्म वॉट एवर illegally caused to any person
ऑप्शन ए इन बॉडी एंड माइंड, ऑप्शन बी रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड इज इट ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आज ही हमने ये क्वेश्चन करा है, आई एम श्योर कि आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बीएनएस की बैरक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कई और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ नए वीडियो में अपने। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।